and welcome to Sadia's Moment. This is my Valentine's look. If you have any plan for Valentine's, so you can try this easy and quick makeup look. So get ready with me. So the first thing first, to moisturize your skin. So here I'm using CeraVe lotion to moisturize my skin. This is best for dry to very dry skin. The second most important thing is to prime your face. So here I'm using ELF Vitamin C Putty Primer. क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी विटामिन सी इंक्लूडेड है तो दिस इज़ बेस्ट फॉर योर स्किन क्योंकि ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है. So properly apply all over your face, especially the dry area. I feel that inner corner of my eyes are very dry, so that's why I'm applying here around my nose and especially on the laugh lines. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ Maybelline की फाउंडेशन फिट मी. इसका नंबर है 115. और अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाउंडेशन पूरा दिन स्टे करे तो आई हैव अ टिप फॉर यू. सो करना आपको ये है कि यूज़ योर डैम्प स्पंज, और जो कोई भी मेकअप फिक्सर आपके पास है आप उसको डैम्प स्पंज के ऊपर स्प्रे करें और अच्छे से ब्लेंड कर लें. सो योर फाउंडेशन विल स्टे फॉर अ होल डे. बाय द वे मैं यहाँ पे रेवोल्यूशन का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ और नेक पे भी अच्छे से उसको अप्लाई कर लें. And after that I'm using this concealer around my eyes and nose and lips. इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ NYX का setting powder to bake my under eyes. Now it's time for eyebrows. Important part of any makeup. Because अगर eyebrows अच्छे से ना बने हो ना तो makeup look complete नहीं होती. So this is very important for any makeup. And yes, उससे भी ज़्यादा important है to smudge your eyebrows. अगर आप smudge नहीं करेंगे, उसको अच्छे से blend नहीं करेंगे तो that looks very weird. Now I take the Revolution palette. And I'm using the transition shade medium brown and apply on crease. I'm using the RuPaul eyeshadow palette for shimmery shades. इसके eyeshadows बहुत ही मज़ेदार हैं, easy to apply. And I just think that finger से बहुत अच्छे से आपका eyeshadows blend हो जाता है and gives you a fine look. एनीवे जी, कैमरे में देख के लाइनर लगाना बहुत ही मुश्किल है तो मैंने मिरर में देख के ही अपना लाइनर लगा लिया था. यहाँ ग्लिटर पैलेट में से मैं एक लाइट गोल्ड शेड यूज़ कर रही हूँ. वैसे भी ग्लिटर्स आपकी आई को बहुत ही ज़बरदस्त इन्हेंस कर देते हैं. So gives you a shimmery kind of look. I just take a smaller brush for my inner eyes to highlight with the gold shadow. रेवोल्यूशन के पैलेट में से ब्राउन कलर लेकर अंडर आइज में यूज़ करिए ताकि to give it some more definition. Well, it's the time for mascara, so I'm using Maybelline Curl Bounce Mascara. For lower lash line, I'm using White Eye Pencil by NYX. इसका टेक्सचर और पिगमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है. एकदम से आपकी आंख जो है वो खुली खुली सी लगना शुरू हो जाती है. रेवोल्यूशन का फेस पैलेट और इसमें 3 शेड्स हैं, हाइलाइटर, ब्राउन्जर और ब्लश ऑन. तो तीनों शेड बहुत ही अच्छे हैं जो इजीली अप्लाई हो जाते हैं. अगेन रेवोल्यूशन का
हाइलाइटर पैलेट। इसका पिगमेंट भी बहुत ही ज़बरदस्त है, एकदम से आपको अच्छा खासा डिफरेंस फील हो जाता है। Well, highlight your high points. I'm using this gold shade. This is very beautiful shade. Here is another tip for you. Use your damp sponge on your highlighter and it gives you a very fine settled shine. For this look, I decided to have a red lips. So for achieving a red shade, you can mix and match the 2 or 3 colors. मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ Kiki Milano shade. This is very beautiful red shade. हमें एक कलर पे कहाँ satisfaction होती है, so that's why I'm using here the brown pencil over it. फिर यहाँ पर एंगल ब्रश लेकर उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया है रेड शेड में। और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ रेवोल्यूशन की रेड लिपस्टिक जस्ट इनर साइड पे। और here's the final look. Yeah, just to spray all over my face to fix my makeup. Well, the jewelry add a lot to your overall look. Well, this is all for today's makeup look, so hope you like this Valentine's look. If you try this look, please let me know. Hope you like this video. Thanks a million for watching my video, and for more videos please like, subscribe my channel, and never forget to press the bell icon so you will never miss my any video. Till then, bye bye, see you in the next video, take care.